provide employment, self-employment based skill training to 24,332 high school dropouts across 111 training centers in 35 districts of Maharashtra. In 2015, NYCS took up the responsibility of nurturing Indian talent in sports and finding the Olympic medal winners of tomorrow. The strong and dedicated volunteer network of NYCS partnered with India's #1 natural gas company GAIL for the cause. In the year of its inception, search of Indian speed star Gail Raftar was executed successfully across 10 states in 53 districts where more than 26,000 athletes participated. The success of the first phase inspired greater enthusiasm, leading to a much bigger and better second phase. The sports trials were held in 107 districts across 27 states in the second phase. There were 1,13,547 participants in 100 meters, 200 meters and 400 meters categories, where boys and girls in the age groups of 11 to 14 years and 15 to 17 years were selected at district, zonal and then national level. NYCS is aiming at conducting sports trials in 707 districts for the next phase of NYCS GAIL Indian Speed Star. Under the tutelage of the Ministry of Petroleum and Natural Gas and Maharashtra Chamber of Commerce, Industries and Agriculture, NYCS organized a mega event, Bioenergy Urja Utsav, on 7th and 8th July 2017 in Pune. NYCS played the role of a catalyst in creating awareness about the future fuel. Yuva Sehkar apprises the stakeholders about what's happening at NYCS. Communication is an important tool to bring transformation by disseminating information that connects with the youth. Efforts are being made to make connect smartly with all the stakeholders too. गरीब के घर की रसोई और गरीब के घर की दवाई गरीब की जिंदगी बढ़ा देगा। शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये एक संकल्प लिया है। Today, NYCS is empowering youngsters in 540 districts across the nation. From humble beginnings to an organization with 100 crore turnover and a network of 3,85,454 people, NYCS has come a long way. NYCS welcomes anybody and everybody who would like to be a part of this movement. Cooperation, collaboration and co-creation are important for the success of this movement. The movement to empower the youth. The movement to empower the nation. आवाज आ रही है सब लोगों को? जी। सभी लोगों को नमस्कार। NYCS के इस 22वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इस उपलक्ष्य में हमसे जो अभी जुड़े हुए हैं उसमें NYCS के हमारे जो क्षेत्रीय हेड हैं, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हैं, डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं और उसके अलावा हमारे विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत जो हमारे टीम के सदस्य हैं और उनके साथ साथ अन्य कई लोग जो NYCS से किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग अभी जूम से जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोग हैं जो अभी फेसबुक लाइव के माध्यम से भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। इन सभी लोगों का इस NYCS के 22वें स्थापना दिवस पे सभी लोगों का अभिनंदन, स्वागत है। और एक औपचारिक
परिचय करवाना अभी के सत्र के लिए। तो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं हमारे NYCS के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश साहू जी। हमारे साथ अभी राजेश पांडे जी, जो कि हो सकता है थोड़ी देर में जुड़ेंगे, अभी ट्रैफिक जाम में कहीं फँसे हुए हैं। तो राजेश जी जो हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं NYCS के, सभी लोगों को पता है हमारे कि मुरलीधरन जी जो NYCS के संस्थापक अध्यक्ष रहे और वर्तमान समय में भारत सरकार में विदेश राज्य मंत्री हैं। आज उनको ही गेस्ट ऑफ ऑनर होना था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के साथ एक बैठक है जो कल पार्लियामेंट का जो नया बिल्डिंग बन रहा है उसके संदर्भ में। तो बैठक 1:30 बजे होनी थी, वो 5:30 बजे हो गई, इसलिए मुरली जी शायद अब कनेक्ट नहीं हो पाए। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे NYCS के उमेश लौंडे जी जुड़े हुए हैं और एक हमारे अतिथि के रूप में अभिषेक कौशिक जी हैं जो NYCS से काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के OSD हैं। तो इन सभी लोगों का एक संक्षिप्त परिचय स्वागत करते हुए, ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए, आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, जो चीफ स्पीकर हैं, आप सब लोग, हमको लगता है कि जो लोग ज़्यादातर लोग पुणे बायोफ्यूल वाले इवेंट में गए थे और उस पूरे इवेंट में एक तरह से हमारे सहयोगी थे। तो जो हमारे आज के चीफ स्पीकर हैं, उनका एक छोटा-सा परिचय, क्योंकि उनका जो परिचय, हम भी उनको व्यक्तिगत रूप से भी 1-2 बार मिले उनसे। डॉक्टर प्रमोद चौधरी जी, जो एक IIT बॉम्बे के एलुमनस रहे, IIT बॉम्बे से पढ़ाई की और सबको पता है देश की सबसे अच्छी प्रौद्योगिकी संस्थानों में से एक IIT बॉम्बे है। और उसके बाद फिर विश्व के सबसे अच्छे मैनेजमेंट स्कूल में से एक हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल से MBA किया इन्होंने। और प्राज इंडस्ट्रीज़ जो आज के समय में बायोफ्यूल के क्षेत्र में देश में अगर एक सबसे बड़ा नाम है तो प्राज इंडस्ट्रीज़ एक बड़ा नाम है। और अगर उसका परिचय देना हम प्रारंभ करें तो शायद चीफ स्पीकर जो हमारे प्रमोद जी हैं उनसे अधिक समय हमको लग जाएगा। तो हम बस संक्षिप्त में एक बताने की कोशिश करेंगे कि प्राज इंडस्ट्रीज़ है क्या? और प्रमोद जी ने एक जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, कि पहली जनरेशन में एंटरप्रेन्योर बने और 1983 में जिन्होंने इस प्राज इंडस्ट्रीज़ को शुरू किया, अभी लगभग 37 वर्ष हुए हैं। और इन 37 वर्षों में कहाँ से कहाँ लेकर गए, इसका छोटा-सा उदाहरण हम प्रयास करते हैं, शायद समझ में आए आप लोगों को, कि 5 महादेशों में 75 देशों में काम कर रही यह कंपनी वर्तमान समय में भारत की सबसे बड़ी बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी कंपनी है, प्राज इंडस्ट्रीज़। और एकमात्र ऐसी इंडियन कॉर्पोरेट कंपनी है जो कि बायो रिफाइनरी डेमो इंडिया में जिन्होंने लॉन्च किया। और वर्तमान समय में जो देश के सारे बड़े OMCs हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़, जो IOCL, BPCL, HPCL, इनके लिए कमर्शियल प्लांट्स भी रन कर रहे हैं अभी। तो ये एक जो फर्स्ट होना, देश में फर्स्ट होना, टॉप पे होना, ऐसा अचीवमेंट प्राज के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। विश्व के उन कुछ कंपनीज़ में है जिनको यह सौभाग्य प्राप्त है जो बायो रिफाइनरी रन कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी रन कर रहे हैं। प्राज इंडस्ट्रीज़ विश्व के कुछ गिने-चुने कंपनी में से है। और दूसरा एक और है कि अपने तरह का एक कंप्रेस्ड बायोगैस का इन्होंने फिर से प्लांट एक सेट किया है, वो भी अपने तरह का एक पहला ही प्लांट है। काफ़ी लंबा-चौड़ा परिचय हमको मिला है। जो निट्टी मुंबई आप लोग जानते होंगे, देश के 10 सबसे बड़े मैनेजमेंट संस्थानों में से IIM के साथ निट्टी भी आता है। वैसे और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, ऐसे-ऐसे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य हैं। प्रेसिडेंट हैं अभी एडवाइजरी काउंसिल ऑफ सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के। CII नेशनल काउंसिल अभी जो वर्तमान वर्ष है 2020-21 उसके सदस्य हैं। CII टास्क फोर्स ऑन बायो एनर्जी के मेंटर हैं। तो जैसा मैंने कहा कि शायद हम अगर परिचय पूरा दें, तो हमने प्रयास किया कि किस तरह से एक स्टार्टअप जिसको बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। 83 में जब हम लोग का जन्म नहीं हुआ था, उस समय से एक यात्रा शुरू हुई और वर्तमान समय में अपने ही जीवन काल में उसको देश में नंबर 1 पे पहुँचाना, ऐसा एक प्रमोद जी ने ऐसा काम किया है। और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग आज इनको सुनेंगे। इनके नाम पे लगभग 10-15 ऐसे अवार्ड्स तो हमारे सामने जो हमको मिला है। फिर से कुछ उसमें से जो कुछ हमको लगा कि हम बताना चाहें, कि एशियाज़ ग्रेटेस्ट लीडर 2018 अवार्ड मिला
यूआरएस एशिया 1 मैगजीन से, और इसमें जो प्रोसेस रिव्यूअर्स थे वो पीडब्ल्यूसी, फिर से जो विश्व की 2-3 सबसे बड़ी कंसल्टिंग कंपनी है उसमें से एक, उन्होंने जो रिव्यू किया था उसमें इनको एशियाज ग्रेटेस्ट लीडर 2018 अवार्ड मिला। एबीपी माझा, जो एबीपी न्यूज़ है, उसका एबीपी माझा सम्मान पुरस्कार 2018। निटी मुंबई की तरफ से इम्प्रेसेरियो एक मोस्ट इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला हुआ है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया एज वेल एज बाय आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे। नेशनल लेवल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड बाय जागतिक मराठी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन थ्रू इनोवेशन अवार्ड बाय केमटेक फाउंडेशन फॉर लीडिंग प्राज इनटू डेवलपिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। तो ये कुछ हमारा एक प्रयास था। हमको लगता है कि शायद हम उस प्रयास में बहुत सफल नहीं हो सके बताने में, क्योंकि प्रमोद जी से जो लोग मिले हैं, जो लोग उनको जानते हैं, उनका इस उम्र में 37 वर्षों के अपने कठिन एक तपस्या के बाद आज जहाँ पे उनकी कंपनी पहुंची है, उसके बाद भी जो ऊर्जा उनमें है, हम तो देखे थे तो हमको बहुत आश्चर्य हुआ था कि इस मुकाम पे आने के बाद भी वो ऊर्जा, स्टार्टअप वाली ऊर्जा भी है। तो आज हम इनको सुनेंगे और हम सभी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस दौर में। आगे की कार्रवाई के लिए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश साहू जी को आमंत्रित करते हैं। प्रकाश जी, ओवर टू यू। धन्यवाद मनीष जी। आज नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसाइटी के 22nd फाउंडेशन डे के अवसर पर हमारे साथ उपलब्ध है माननीय डॉक्टर प्रमोद चौधरी जी। डॉक्टर चौधरी साहब के बारे में बहुत सालों से सुना है। मैं पुणे का अपना कार्यक्रम NYCS का प्रोग्राम में आ नहीं पाया था, उससे पहले भी मैंने बहुत सुना था, और हमारे सब देश भर से आए हुए बच्चे उनके साथ कुछ समय बिताए थे वहां पर। राज के बारे में सब लोग, जो भी ऊर्जा क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, सब लोग जानते हैं। हमारे सब लोगों के लिए हर्ष की बात है, खुशी की बात है, आज ऐसे महानुभाव हम लोगों के साथ, हम लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए डॉक्टर चौधरी साहब। NYCS के उपाध्यक्ष मेरे साथी मनीष कुमार जी, NYCS के बोर्ड के अन्य सदस्यगण जो इस आज के कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं कुछ लोगों को देख पा रहा हूं, कुछ लोगों को नहीं। मेरे दोनों सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स उमेश जी, श्रीरंग जी, NYCS के देश भर से उपस्थित जितने भी मेरे साथी एम्प्लॉइज हैं, मुख्यतः हमारे प्रांत और जिला प्रतिनिधि जो यहाँ पर उपस्थित हैं, इन सब लोगों को आज का इस शुभ अवसर पर मैं सब लोगों को स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं 22nd फाउंडेशन डे। दोस्तों, 21 साल NYCS के हो गए। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों से सपोर्ट से हमको मालूम नहीं पड़ रहा है, हम एक बहुत बड़ा ये जो नेशनल लेवल प्रोग्राम, हम एक दूसरे जगह जाते नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है। इंटरनेट वीक है, क्लियर है क्या आवाज? ठीक है, यस, क्लियर, थैंक यू। तो ऑलमोस्ट 600 से ज्यादा जिला में NYCS कार्यरत है अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से, और आप लोगों ने ये सब किए हैं। जननिधि हमारा जो फाइनेंस डिवीजन है, माइक्रो क्रेडिट थ्रिफ्ट सोसाइटी जो है, देश में 33 ब्रांच है हमारा, 6 राज्यों में, और 250 करोड़ रुपए का अलग अलग लोन हमने टाइनी एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को दिया है, सपोर्ट किया है। एंड यहाँ उपस्थित मैक्सिमम लोग जो इन्वॉल्व है, देश का हमारा सबसे बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो खेल का प्रोग्राम, हमने गेल रफ्तार लिया था। अभी हमने छोटा सा हमारा वीडियो क्लिपिंग में देखा, मोरलेस सब ब्रीफिंग है, मैं उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ। खेल के माध्यम से भी अपना एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी डिवीजन हमने देश भर में किए हैं, बहुत बड़ा हिस्टोरिकल एक अचीवमेंट है, जिसमें 3,75,000 से ज्यादा
बच्चे भाग लिए थे एंड आज उसमें से 3,75,000 में से केवल 22 बच्चे जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में आज देश के लिए सम्मान लेके आ रहे हैं, वो भी हमारा एक छोटा आप लोगों का सहयोग से प्रयास था, देश का गौरव था। उसको छोड़ के कोविड हमारा स्किल डिवीजन जो है वो 50,000 से ज्यादा बच्चों को स्किल इम्पार्ट किया है, 1 लाख से ज्यादा बच्चों के स्किल के बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया है। मैं यह सब चीज थोड़ा दोबारा दोहराता हूं कि कुछ स्थानों पे लोग हमारे कार्यकर्ता हैं एसआर और डीआर, जिनको मालूम नहीं होगा कि जो अन्य राज्य में जो कार्यक्रम हो रहा है सबको एक बैकग्राउंड देने के लिए कोशिश कर रहा हूं। इसके अंदर हमने बायोफ्यूल के नाम पे, बायो एनर्जी के नाम ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। भले ही हम लोग उसमें से बहुत लोगों को मालूम नहीं था कि बायोफ्यूल क्या है, बायो एनर्जी क्या है, ऐसे कार्यक्रम मिला था। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कार्यक्रम के माध्यम से सब लोगों के अंदर में हमारा एक सेंसिटाइजेशन हुआ था, एक अवेयरनेस क्रिएशन हुआ था। जो कार्यकर्ता हमारे अलग अलग समय में पूछते आए हैं कि सर उसमें हम आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे। तो आज हमारे सामने केवल हमारे देश के नहीं, विश्व के सबसे बहुत बड़े हस्ती हमारे साथ हैं, जो उनका जो 37 साल का अनुभव, जैसे मनीष जी ने कहा, वो हमारे सामने रखेंगे। वो हम सब युवाओं के लिए यूथ आइकॉन है, लीडर है, रोल मॉडल है। आज वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर चौधरी साहब को पास जाने से पहले एनवाईसीएस का पिछले मुख्यतः पैंडेमिक के दौरान जो कुछ केवल एनवाईसीएस के लिए नहीं, हर तरह का सामाजिक एवं बिजनेस सेक्टर के लिए, सब लोगों के लिए एक टेंशन का टाइम रहा है। देश बड़ा एक क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरता है। हम अप्रैल के महीने में सोच रहे थे कि जुलाई अगस्त तक कुछ नॉर्मलसी आ जाएगा। जुलाई अगस्त में लगा कि दिसंबर तक कुछ आ जाएगा। आज दिसंबर में सोच रहे हैं कि कब नॉर्मलसी आएगा, एंड जो नॉर्मल आएगा वो नॉर्मल होगा क्या, या किस तरह का नॉर्मल आएगा, उसको हम एक न्यू नॉर्मल के नाम दे रहे हैं। पता नहीं वो न्यू नॉर्मल क्या होगा। यह जो सर्च प्रोसेस, जो खोज में हम सब लोग लगे हैं, ये एक एनिमल इंस्टिक्ट होता है कि आदमी जब प्रॉब्लम में पड़ता है, एक व्यक्ति या संगठन, तो उसमें से उभरने के लिए बहुत तरह के प्रयास करता है। वो हम इंडिविजुअल लेवल में, एनवाईसीएस एक संगठन के हिसाब में हम सब लोग कोशिश करते आए हैं। हमको और भी थोड़ा सीरियसली सोचना है कि इसमें से कैसे उभरे, एंड एनवाईसीएस कुछ रोड मैप अभी बनाया है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन। एक तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो सकता है, नहीं तो गोइंग बैक टू नेचर, जैसे डॉक्टर साहब हैं बताएंगे। जो नेचुरल प्रोसेस में, चाहे बायोफ्यूल हो, कॉम्प्रेस बायोगैस हो, जितने तरह नए नए चीज आ रहे हैं, न्यू बिजनेस एवेन्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि एनवाईसीएस का मेनली लक्ष्य रहा है कि युवाओं को सामाजिक एंड आर्थिक सशक्तिकरण करना। यह प्रयास में हमने पिछले कुछ महीनों में आत्मनिर्भर युवा, आत्मनिर्भर भारत, इस दिशा में एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज एक्सपर्ट्स लोगों को लेके हमने किए हैं। आज की इस कड़ी में डॉक्टर चौधरी साहब हमारे साथ हैं। वो हम सब लोगों को गाइड करेंगे, मार्गदर्शन देंगे। उसमें से कुछ रास्ता निकलेगा। आई एम श्योर उनका डायरेक्शन पे एंड उनका सहयोग से हम लोगों को कुछ दिशा मिलेगा और कुछ काम करने का मौका भी मिलेगा। डॉक्टर साहब आज हमारे साथ हैं। एंड वहां जाने से पहले मनीष जी ने उनका बहुत सारे उपलब्धियां और अवार्ड्स बताए। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट 1-2 चीज है जो मैं कहना चाहूंगा। इसमें है कि डॉक्टर साहब को सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड एक मिला है, जॉर्ज वॉशिंगटन कावर अवार्ड 2020। बायो इम्पैक्ट और अवार्ड्स बताएं। कुछ इंपॉर्टेंट 1-2 चीज है जो मैं कहना चाहूंगा जी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए जो पहला भारतीय है जिनको यह ग्लोबल ऑनर मिला है, आज वो हस्ती हमारे साथ है। हमारा सौभाग्य है डॉक्टर साहब। उसके साथ साथ डीलिट, डॉक्टर लिटरेचर इन तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, वो भी एक बायोफ्यूल इंडस्ट्री में काम करने के लिए उनका रिवोल्यूशनरी एफर्ट के लिए इंस्टीट्यूशनलाइजिंग मेनली क्वालिटी बेंचमार्क, इस क्षेत्र में काम के लिए वो डीलिट मिला है। एंड डिस्टिंग्विश्ड एलुमनस अवार्ड एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड आईआईटी बॉम्बे, उनका अल्मा मैटर से वो भी मिला है। ये 3
और चीज इंपॉर्टेंट उपलब्धियां और अवार्ड मिला है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। NYCS के पूरा सब लोगों की तरफ से, NYCS की तरफ से आपको बधाई देते हैं सर। और मैं अभी माननीय डॉक्टर साहब को कहूंगा वो उनका हमारे जो बच्चे हैं देश भर से आपका अभिभाषण रखेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। डॉक्टर साहब। Very good evening, everybody. First of all, I have to congratulate NYCS for completing 21 years since its inception and doing excellent work for the youth of this country. I was just going through the details, and the number of programs NYCS successfully launched is really very impressive. We had an opportunity to start interacting with NYCS since 2017 when they held a program in Pune on biofuel and bioenergy. Rajesh Ji Pandey, whom we know very well, has been instrumental in motivating us. Honorable Dharmendra Ji Pradhan personally took a lot of initiative and guided both NYCS and people from Pune to make this program a great success. My thanks to Prakash Sahu ji, Manish Kumar ji, and Umesh ji Londe for giving me this opportunity, inviting me for this program. Of course, I'm sure the main force behind all this has been Rajesh ji Pandey. So I will definitely help walk through with some of my observations in this space of alternate energy, renewable fuels in nation building. Since Pradhanji has taken over this ministry, there has been a major push for this very important alternate fuel. And last 4-5 years, we have seen substantial changes in the policy, which is very, very conducive for achieving those goals. So with your permission, with the help of some of my presentation, I will walk through my ideas. So once again, congratulations to all NYCS members and celebrating this 22nd Foundation Day. The topic of my presentation is opportunities for youth in alternate energy sector. I think in today's time, it is very, very appropriate, very practical approach, and the subject given to me has been having that kind of a potential. In any economy, in any country, in any nation, there are three challenges. One, the nation has to fight about: scarcity of various resources, security of the nation, and scalability. In case of India, all the three parameters are very, very critical, especially the last one, scalability. With population of 1.35 billion population, I think that becomes more than important that we have to see that each and everyone is taken along with us. There is the inclusiveness to the whole effort. And we have to also see that everything is properly provided for. Scarcity is not there, neither for water, nor for fuels, nor for anything. And it should be security. It gives rise because of Atmanirbharta. That self-reliance gives you a security. So this is the challenges which we have to face, overcome. On the other side, we have to ensure that there is a sustainability. So sustainability is that it has to be there throughout without any loss to anybody. While achieving these three parameters, we have to ensure that the people, the planet, and the economy is
not hurt. It is well balanced. And that's what it's called sustainability. So this is what I call as a innovation grid. The left side are the challenges in the blue color: security, scarcity, and scalability. The right side are the parameter of sustainability in green: people, planet, and profit. So solving these issues or ensuring this sustainability, the middle portion is showing what are the solutions. And I'm happy that NYCS is more or less following those footsteps. It's education, it's innovation, and entrepreneurship. These are the solutions which will help us to overcome the challenges and ensure maintain the sustainability. We notice that the innovation is at the center of this grid, and that's why I call this is a innovation grid. And this will definitely help us achieve Atmanirbhar Bharat. Entrepreneurship is also playing a very important role for achieving this. Of course, the starting point is education. And because without education, it is very difficult to make progress on all these parameters. Next. Let's look at the energy. The main source of energy are been fossil fuels and crude oil. These are the two traditional sources. Fossil fuels, which are crude, contains coal and crude oil. If you look at this, there's a huge dependence on imports. 80% of the crude oil is imported, which also means it also affects our security, that we are depending on the foreign countries for basic source of energy. Other aspect is that both coal and crude oil, when used, they give rise to pollution. And that pollution is also very harmful. So this is the limitation of fossil fuels, especially coal and crude oil. The second aspect is these fossil fuels are not finite. They are depleting source. As you pump in more oil from the Mother Earth, the levels are going to go down. As you mine more and more coal, the quantity of coal is going to reduce. So they are not finite sources, they are depleting sources. The other aspect is that when put to use, especially when you are extracting energy out of that, they release carbon monoxide and carbon dioxide in atmosphere. And these are culprit giving rise to greenhouse gas effect, which in turn causes climate change. So fossil fuels, as I say, they are not finite, and when they are put to use, they are giving pollution, and because of carbon monoxide, carbon dioxide, they are creating a cover. You know, greenhouse gas, it creates a cover about 200 kilometers in the sky, and then the heat gets trapped between that cover and the earth, and that's where the temperatures are rising, and that's called climate change. I'm sure all of you are aware that effect of climate change, where the temperature is increasing, the seawater temperature is going up, unpredictable seasons are happening, whether it is flooding, drought, all those things. To overcome that, alternate energy is also critical because of that. So we have seen that alternate energy plays a role to replace fossil fuels. Alternate energy helps us to take care of our security, really critical to avoid or delay the GHG effect or to mitigate climate change. As I was saying, the main source is crude oil, coal. These are the two basic this thing, and then you have LNG or CNG. Now these are coming from partly imported, partly local. And the last source, which is the topic of my love, affection, and discussion, is biomass. So crude oil, we saw that what is the problem is being used in mobility and industrial applications. Coal is used generally in thermal plants to create electricity.
LNG is going into cooking and industrial applications. And the last one, which is biomass, which can be converted through biorefinery to produce renewable gas, or what we call the compressed biogas and bioethanol. So this output of bioethanol and compressed biogas is excellent source for cooking, industrial, and mobility application. However, the India's energy mix so far is dominated by fossil fuels. As I was saying that fossil fuel sources are finite. This causing us excessive dependence on the imported sources of energy. Volatility of global oil prices is affecting our foreign exchange. There's a tremendous drain. More than 80% of the oil is imported. As I said, the fossil fuels are causing or damaging the planet Earth irrevocably. It is damage, it remains damage. The greenhouse gas emissions following the combustion of fossil fuels are identified as a major cause of climate change. Carbon emissions from combustion of fossil fuels are toxic and also health hazards. As I said earlier, imported fossil fuels, especially oil, are a major contributor for foreign exchange outgo. Harnessing the renewable energy sources is an imperative for India's sustainable development, and it is a given for long conclusion that we have to definitely adopt renewable energy in our mainstream. This problem of climate change has been appreciated by UN, United Nations, and there's a body called UNFCCC, Framework for Climate Change. And this became in prominence in the early 2000. It was known, but it has come into the mainstream in 2000. So there are two approaches being taken. The famous Paris Agreement, which is called COP21, happened in 15 and 16. 15 it happened, 16 we signed it, and that took a lot of decisions in terms of how to control climate change. So two aspects. There are 17 sustainable development goals, that what are the development to be taken. And if you see, NYCS is practically working on many of these things. Unknowingly or knowingly, I'm sure, the eradication of poverty, zero hunger, quality education, gender equality, reduce inequality, all those things are being followed. And it's also the government's agenda that we have to take care of masses with the help of sustainable development. So these are called sustainable development goals. The other aspect is NDC, nationally determined contributions. And these NDCs spell out that by 2030, we are able to replace at least 40% of fossil fuels. This is a big commitment. And the Petroleum Ministry mainly and MNRE, Ministry of New and Renewable Energy, are the two arms are working very closely with the support of DBT and others to achieve or to help achieve this by 2030. And that's where a lot work is happening, and a lot of work can be contributed by youth, especially coming from the regional areas. And that's what I'm trying to share with you. In SDGs, Sustainable Development Goals, clean water and sanitation is the important aspect. Sustainability cities, like a smart city movement, which this government launched, is also playing an important role. And uh, you can see this is available on the internet and one can study, and I'm sure NYCS could be in a better position to adopt in their otherwise other programs and really align their efforts in this direction. Next. So let's say, what are the sources of alternate energy sources? What are the things possible?
So there are two major blocks. One is the PV, photovoltaic solar, which has become now very, very popular. It is the costs have also come down, and there's a solar mission launched by Government of India. Under this mission, the first step is to make 175 gigawatt of electricity by 2022, and recently they have enhanced this target to go to 450 gigawatt by 2026, I think. In that period, they have to go for 450 gigawatt. So these are mainly going for large capacity plants, but it doesn't mean that we don't have a scope to go for a next level. Rooftop. Rooftop solar plants are becoming more and popular. There's also funding available, and that can reduce the electricity consumption of the fossil fuels. The electricity made from fossil fuels can be reduced. Solar lanterns, especially the interior part in Adivasi areas and other backward areas, solar lanterns are becoming have become very common, very popular, and that's why which is providing electricity, light for the students to carry out their studies and other activities. Handheld torches made from solar. There's a very classic example is that the farmers who have to work in the fields in the early morning, these handheld torches really can be of very great use so that they're able to start the work even when there's still light is to come. And these handheld torches are very compact, not very expensive, and they can be charged during the day and can be used in the late night or early morning. And of course, the solar pumps has become the regular feature in most of the irrigation requirements. So if you see that PV solar has really revolutionized the whole environment by making these things available, and there's a scope. What are the opportunities for the youth also? That this maintenance of these solar plants and solar gadgets, it offers a huge possibilities, and there are possibility of getting skill develop program, training of how to handle these things, replacement and all those things. Wind and hydel are generally going for large capacity plant. Though small windmills are not yet fully developed, but a small windmill for each house has been thought of, but it is still not become so popular. And that's where it is just now. So I'm not taking much time on wind and hydel. Hydel power plants are of course big power plants, but the PV solar is definitely a big opportunity for the youth to get engaged with. And last but not the least, as I say, is biomass. So let's look what are the possibilities there in biomass. The biomass is available, is shown as number of crops are there, and they can be made available from agri residue and forest residue. These are the two major sources of biomass, and it's available in millions of tons. So far, they are going west. They remain in the field, or some portion of it can be given to the cattle, but majority of the biomass is not getting used for any value-added requirement or value-added opportunities. We believe that this biomass is one of the very important rich source to generate bioenergy and giving rise to bioeconomy. This will create additional income and revenue stream for the farming community. Biofuels in liquid and gaseous forms are carbon neutral. You know that the plants absorb carbon dioxide, and when they are put to use, if you create carbon dioxide again, it becomes carbon neutral. So it is a circular kind of a cycle. Biofuels offer model distributed energy generation because biofuels, if they are made in the various part of the country, and they can be generated from the plants which are distributed all across. It is no need because biofuels are not produced from a very single big plant or something like that. And
Distributed biofuel plants, they create local economy, support local economy, rural economy, and that I'm sure also going to curb migration issue. Migration from rural to cities can be definitely curtailed because of the livelihood opportunity created by distributed biofuel plant. They can give rise to employment and entrepreneurship opportunities in the rural community. How? Let's see how it can be done. Biomass, the first big challenge is aggregation of the biomass, collection. Now that can be done with the help of machinery or by labor. So that should be the starting point. If it's done by the machinery, this maintaining of this machinery, there are a lot of societies and government schemes which give support, loan support for buying this machinery, and they can be deployed in the farms. It can be also done by a machinery is bought and it is rented for various farms. It can be deployed to collect the biomass from place to place, and it can create a very good revenue stream or income stream for the uh, youth who can run this machinery. The other part is biomass storage, because this biomass is required round the year, and there will be some efforts required because after the harvesting is done, either the next harvesting cycle of a different crop is taken care, and then at least for next 3-4 months you store that, or maybe a little longer. But creating this biomass storage capability and related logistics, they become very, very important. The small to medium sized process plants, this biomass can be converted either into biofuel of the liquid side, ethanol, or they can be converted into biogas. And the biogas can be cleaned and compressed to operate the CBG, compressed biogas pumps. You know that the government of India launched a scheme called Satat, and I'm sure you are aware of that. This is from MOPNG, Satat. They are envisaging building of 5,000 plants all across the globe in next 5 years' time. And I think that's a big, big opportunity. Of course, these are little mid-sized plants, but there's also the possibility of having a small-sized plant, a cluster of small-sized plant to achieve the same purpose. And that's where both things can be coexist. So if we can look at the possibility of putting up the uh, medium-sized plants or the small-sized plant, and in that you can also use, apart from biomass, the cow dung and other things. Cattle feed dung can be put to use to produce biogas. Government has given an excellent rate, and they're giving a offtake guarantee for I think it's the 46 rupees a kilogram they're paying for biogas, which is very, very attractive, and they're giving an offtake guarantee that will be picked up. So I think that is one area where the compressed biogas can be put as one of the agenda, and with the help of this mid-sized process plant or small-sized process plant from the cattle feed waste and all that can be achieved. The rural prosperity can come out of this. And because of this such kind of a CBG plant, we need operators for these CBG pumps. CBG pumps can be put in the rural areas with the help of bank loans and some funding, and they can really become a source of good revenue and employability to the people who will manage these pumps and do the supply of dispensing of the compressed biogas. Maintenance of single fuel vehicles. Now, single fuel vehicles, for example, now government has allowed use of 100% ethanol. And the idea is that this will be produced and sort of consumed in the rural area itself. So this is another opportunity. And how to maintain this, these are little different. I think Bajaj and TVS have come forward to introduce this 100% ethanol motorcycles. So these are the this thing, or there are some dual also, or there are only based on biogas. And then there are dual fuel vehicles for diesel and biogas. A tractor can run partly on diesel, partly on biogas, or diesel and ethanol. So all these permutation combinations are
taking shape now, and they will happen at the point of use. And point of use is going to be the rural part. Various district and taluka places or villages around the country will be using these vehicles, and this kind of a requirement will happen. So this will give rise to the rural prosperity. So biofuels will facilitate transformation and boost the bioeconomy. That is the belief which we are having. And I'm very happy that Honorable Mantriji Pradhan sir also shares the same vision. He is in fact the prime mover under the guidance of Honorable Prime Minister, has launched variety of these schemes, which is changing the energy landscape all across. Next. There are auxiliary opportunities also that you will require skill development for operating such process plants, maintaining these plants, use of technology for digitalization, because that will also play a very important role. When to procure the biomass, when to ship it, what is the output, so all those data with the help of digitalization can be maintained, and that will be also useful to operate the whole system. That ecosystem which will get generated out of this will need a lot of computerization and digitalization, because it is the system of 21st century. And the other part is logistics, supply chain, or evacuation, both sides, either to have a input material or for the finished product to be moved out. So there is a tremendous requirement in the ecosystem to achieve or organize this logistics. And last but not the least, it will also give rise to a lot of social innovation, because as I say, these are the examples or these are the parameters for maintaining the sustainability. And social innovation is an integral part of maintaining the sustainability by taking people, planet together while achieving some economy. So this is the way I look at it, that these auxiliary opportunities will also play a role, and really one can apply the mind to see what more can be done out of this. Next. So friends, this is a short presentation I had done. Serving the nation through sustainable and energy efficient technologies has been our motto. And the picture on the right side shows our dream that a stack of agri-waste can act like a petrol pump or a ethanol pump or a biogas pump. Thank you very much for your listening. And if there are any questions, I'll be more than happy to answer. I don't know what is the provision organizers can do. थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, इतने डिटेल्स में और इतने अच्छे से बायोफ्यूल के साथ साथ अदर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में भी बताने के लिए, सोलर, विंड एनर्जी। सो अगर हम लोग अगर किन्हीं को कुछ प्रश्न पूछना है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम लोग देख लेंगे। इन द मीनवाइल आई थिंक राजेश जी हैज ज्वाइंड, बट शायद नेटवर्क इशू है तो वो शायद बात नहीं कर पाएंगे। सो प्रकाश जी, कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं क्या? टाइम है क्या? Or you can write down questions to us. I mean, I will be happy to connect with the people who are interested to know more about it. In Pune, we can show this. We have a lot of R&D and demonstration activities here, so we can show them on the spot. But that will be more practical. We have a demonstration plant 40 kilometers from here. We can visit that. Rajesh ji has seen that project, which is just 40-50 kilometers from Pune, or in our R&D. And I think that will be very useful exercise if you are. Sure, So sure. I leave it to you, because maybe question answer, maybe monitoring could be a little difficult. And there's a lot of things. This is what I say is a brief presentation. So we have people working in the agri side, people working on the process side, and we also people working in the interior part of India. नहीं, वही ठीक रहेगा कि सब लोग जो भी है, बाकी लोगों के मन में भी कुछ प्रश्न रहेगा तो इंटरेस्टिंग है। मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चन लग रहा है ये सब देखने के बाद। तो समय बहुत कम है,
मुझे इसे मेरे हिसाब में हम थोड़ा सा क्वेश्चन लिखेंगे, अपना कंपाइल करके कोऑर्डिनेटर अपने यहाँ पर भेज देंगे। मनीष जी ने तो उमेश जी उसको कोऑर्डिनेट करके डॉक्टर साहब के ऑफिस में भेज कर उसमें थोड़ा फर्दर क्लैरिफिकेशन, मिड साइज, स्मॉल साइज एंड जो बड़े हैं उसमें उन्होंने अपने स्किल के बारे में, बाकी सब यूथ के लिए क्या क्या ऑप्शन है बताए हैं। उसके बारे में जो चाहिए हम एक बार एड्रेस उनसे लेके ईमेल में आप आंसर कर सकते हैं, नहीं तो कुछ बातचीत करके आगे एड्रेस कर सकते हैं। I'll put our Mr. Venugopal Nair is on the screen attending this meeting. He is connected with I think उमेश जी के साथ है, आपके साथ भी मेरे ख्याल से है, मनीष कुमार के साथ. So he is the person who will be specifically coordinating any inquiries are there. So Venugopal, are you there somewhere? Can you speak something? Anyway, it is. Yes, sir. Good evening, sir, and all the friends from NYCS. Hello, can you hear me? Yeah, yes. Yes, sir. Good evening, NYCS colleagues, friends who we have worked together on the Biourja Utsav in Pune, and many of your members are our friends and well known to us. I keep meeting them in Pune as well as in Delhi, and we can very well coordinate this activity which Dr. Chaudhary sir has suggested, and with the help of your representatives like Dr. Umesh Lunde and Umesh ji, whom we met, Manish ji also, we can take it forward. And any queries that you have, you can pass it on to us through Umesh ji, and Dr. Saab's office will respond to all those queries and come back with our suggestions. And if we have some more information to be shared, that also can be done from our side. Mr. Venugopal he spent time in Delhi, most of the time also he is there. And there are a lot of arms. There's also a body called IFG, Indian Federation of Green Energy, which is also promoted by, I think, Gadkari ji and other people around that. It is supporting bamboo plantation. So that's another beautiful crop. And bamboo has got a status of a grass. And that's why the bamboo cutting and all that harvesting has become very easy. And bamboo has got a lot of potential to work as a biomass. At the same time, it can be also helpful for doing artifacts and so many things. So bamboo also can give rise to a lot of small industries in the countryside. Northeast में काफी bamboo plantation है. So उसमें भी किसी को interest है, that also we can give inputs how to grow bamboo and what more can be done from bamboo processing. There are a lot of opportunities possible with the help of these various crops, and will be more than glad. So Mr. Venugopal is also connected with that IFG activity, and he can help you to get the more details on that area too. Yes, sir. Dr. Pramod Chaudhary is the president of Indian Federation of Green Energy. I work under his guidance, and we can join hands. IFG and NICS can join hands, and we can work together on various projects. Thank you. Thank you, Venugopal ji. Yes, sir. अभी आपने बताया कि प्रमोद जी इज आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फेडरेशन फॉर ग्रीन एनर्जी. सो हम पहले ही बताए थे काफी लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन था, इसलिए हमने कुछ शॉर्ट किया था. That is not the point. Point is that they are like-minded people, so you'll enjoy knowing them. That's the thing we are saying. Sure. Yeah. So Pramod ji, mostly I think biofuel energy जो ऊर्जा उत्सव था पुणे में, उसमें हमारे लगभग 400 के आसपास डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव आए थे. एंड जो बसेस गए थे आपके फ्यूल से, बायोफ्यूल से चलने वाली बसेस से ही गए थे, और प्लांट्स वगैरह भी कुछ उन्होंने विजिट किया था. Yes, sir. सो जैसा बताया प्रमोद जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, इतना जो आपने एक बात बताई. और उसमें अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं, इंक्लूडिंग सोलर, कि आप सेल्स से लेके मेंटेनेंस और उसके रिपेयरिंग और इन सारी चीज़ों को. बायोफ्यूल के बारे में हम लोग, प्रकाश जी जैसा बताए कि हम लोग भी सैनिटाइज नहीं थे. बायोफ्यूल, बायो एनर्जी के बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग अवेयर नहीं थे 2017 तक. और 2017 के बाद हमारे डिस्कशन के मेन स्ट्रीम में ये टॉपिक आया, और अब हम लोग एटलीस्ट हमारे सारे जिला प्रतिनिधि, अभी 200 से अधिक लोग जुड़े हुए यहाँ पे डायरेक्ट जूम पे, बाकी फेसबुक पे देख रहे हैं.
सभी लोगों को एटलीस्ट ये टॉपिक पता है, बायोफ्यूल, बायो एनर्जी सबको पता है। और प्रकाश जी बताए कि सब लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि इसमें आगे क्या करना है हम लोग और क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत हमको लगता है कि कुछ स्पष्टता आई होगी प्रमोद जी के इससे कि कैसे एग्रीगेशन से लेके और गाड़ी चलाने तक, मेंटेनेंस तक बायो एनर्जी को यूज करके डीजल और बायो एथेनॉल को मिक्स करके उसका आपका पंप चलाने का। सो अलग अलग लेवल पे, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप मैकेनिक रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं, पैसे हैं तो आप प्लांट लगा सकते हैं, उसका पेट्रोल पंप लगा सकते हैं, बायोफ्यूल पंप। सो इतना काफी इंफॉर्मेटिव रहा सेशन। हमको लगता है थोड़ा टेक्निकल था, थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल था, बट इट वाज क्वाइट I इंफॉर्मेटिव। can't help it. तो थोड़ा फंडास क्लियर किया ना थोड़ा। इसमें ऐसा है कि 2018 में जो पॉलिसी है बायोफ्यूल पॉलिसी, जुलाई में बायोफ्यूल पॉलिसी आई और सतत पॉलिसी 1 अक्टूबर को 18 में आई। उसके बाद उसको ज्यादा आपको लेट नहीं हुआ इसमें, अभी अभी वो पॉलिसी आके इट इज टेकिंग ऑफ एंड दिस इज द राइट टाइम। And I'm sure Honorable Minister will be very happy to support NYCS activities in this area. जैसे कि I'm sure earlier I think skill development he was looking after, but now he's not with him. But still skill development and other areas also can play an important role in this space. So I'm sure मंत्री जी का बहुत मार्गदर्शन मिलता है उनका, अच्छा है जी। Okay, thanks a lot, Pramod sir, Venugopal ji will be in touch, keep in touch. So सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर हमारे जो कुछ लोगों को हम वीडियो जिनका देख पा रहे हैं कि गांव से और कहीं कहीं से कनेक्ट हुए हैं इसमें, हमारे जिला प्रतिनिधि, राज्य प्रतिनिधि, क्षेत्रीय प्रतिनिधि, तो उन सभी लोगों को जो अपना कहीं कहीं से गांव से एक पुअर नेटवर्क के बाद भी कनेक्ट हुए, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टीम के जितने मेंबर्स हैं, प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के जो मेंबर्स हैं NYCS के, और NYCS से जुड़े अन्य जो बेनिफिशियरी रहे हैं वो लोग भी जुड़े हैं इसमें, काफ़ी लोग फेसबुक से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के NYCS के कुछ डायरेक्टर्स हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उमेश जी हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमने प्रतीक्षा की शायद सतीश मराठे जी आएंगे, लेकिन वो भी आ नहीं पाए, अभी तक ऑनलाइन है। तो सतीश मराठे जी का एक बस संक्षिप्त परिचय, अगर आते तो सामने परिचय करवाते। तो शुरू से प्रारंभिक दिनों से NYCS के साथ रहे, वर्तमान समय में सहकार भारती जो कोऑपरेटिव का देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके वो संरक्षक हैं, पैट्रन हैं। और कोऑपरेटिव के सेक्टर में हमको लगता है देश के कुछ 2-3 में सबसे अधिक जानकार और जिनके पास सूचना है, ऐसे सतीश मराठे जी अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बने हैं पिछले वर्ष। तो उनका एक 5-10 मिनट का आशीर्वचन हम लोग को सुनना था, लेकिन शायद कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो इस प्रकार से हमारे प्रकाश जी बहुत ही व्यस्त हैं और पूरा समय इसमें रहे, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी को भी। और हमको लगता है कि इसके साथ औपचारिक रूप से आज का ये सेशन समाप्त करते हैं, इस अनुरोध के साथ कि अगर किन्हीं को बायोफ्यूल में कुछ, किन्हीं के विचार में आता है कि कुछ करना है, तो कृपया करके उमेश जी से या हमसे या किसी से, अभिषेक जी, अभिषेक राठौड़ है दिल्ली ऑफिस में, जुड़ सकते हैं और उनके माध्यम से हम प्राज इंडस्ट्रीज को कांटेक्ट करके, और जैसा बताया प्रमोद जी कि आप कभी भी जाके विजिट कर सकते हैं प्लांट, तो प्रैक्टिकली देखने का एक अलग आइडिया होता है। तो इसके साथ ही सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।